सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural exchange. Pakistan has a future to play in the whole world. आपके कारनामों, आपकी कामयाबियों, एहसासात, ख्यालत पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. समाजी, सखाफती, इस्लामी और सियासी राब्तों का एक नाम सफीर पाकिस्तान। Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपके मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सफ़ीर पाकिस्तान प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और अपनी पूरी फैमिली के साथ देख रहे होंगे। ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मुझे ईमेल भेजते हैं और कॉल करते हैं और प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार करते हैं। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान एक अवामी प्लेटफार्म है। ये आपकी आवाज़ और आपकी पहचान और आपके जज्बात और आपके एहसासात का तर्जुमान भी है। साल साल से नशर होने वाला और आप तक पहुंचने वाला ये प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान ने एक लंबा सफ़र तय किया है, जिसमें आपका ताउन, आपकी मोहब्बत और आपकी शफ़क़त और आपका डेडिकेशन और आपकी राय भी शामिल हाल रही है और हमेशा रहेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने क्या दिखाना है और क्या देखेंगे? ऑफ कोर्स सफ़ीर पाकिस्तान की 7th अवार्ड नाइट। नाज़रीन, हम हर 2 साल में या हर साल कभी कभी सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट का एहतमाम करते हैं और इस अवार्ड नाइट का एहतमाम करने का अगराज़ व मक़ासिद ये हैं कि अमेरिका में रहने वाले वो पाकिस्तानी जो अपने वतन से कूच करके अमेरिका में उन्होंने अपना घर बनाया, अपना मुकाम बनाया, अपना कैरियर बनाया, अपने प्रोफेशन को डेवलप किया और उन्हीं दौरान उन्होंने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी की। नाज़रीन, उस अचीवमेंट्स को, उन कामयाबियों को, उन कामरानियों को दिखाने का ये मौका होता है कि हम उनकी इन मेहनत और मशक्क़त से हासिल होने वाली अचीवमेंट्स को उजागर करें और उनको रिकग्नाइज़ करें। सफ़ीर पाकिस्तान का ये भी एक अवलीन फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों को स्क्रीन पर लाएं और ऐसे लोगों को जमा करें जो एक इंस्पिरेशन बन जाए हमारी आने वाली नस्लों के लिए। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान की 7th अवार्ड नाइट बहुत ही कामयाब रही। नाज़रीन, जब हमने इसका आगाज़ किया तो ये जून का महीना होता है जिसमें वेडिंग्स, ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होती हैं और ये एक चैलेंज होता है कि इस मौके पर किसी प्रोग्राम को कामयाब करना। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान अमेरिका के कोने कोने में पहुंचने वाला ये पहला वाहिद प्रोग्राम है जो आपकी आवाज़ आप तक पहुंचाता है। नाज़रीन, हमारे मेहमान पूरे मुल्क से आए थे, बल्कि यूके और दुबई से भी लोग आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस अवार्ड नाइट की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसमें ज़्यादातर इस बार दूर दराज अपनी फैमिली के साथ आए थे, क्योंकि लॉन्ग बीच रेनेसांस होटल है जो समंदर के किनारे है और बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत इलाका है वो। इसके अलावा सफ़ीर पाकिस्तान की रंगारंग प्रोग्राम और उसकी तरतीब व पेशकश भी बहुत हमेशा आला रही है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान यूँ तो मैंने बहुत अवार्ड नाइट्स किए, ये मेरी 7वीं अवार्ड नाइट्स है, लेकिन इस अवार्ड नाइट में मैंने कुछ बहुत ही चीज़ें ऐसी देखी जिस पे मुझे बहुत नाज है, बल्कि फ़ख्र है कि इस प्रोग्राम में लोगों ने बहुत नेटवर्किंग की और कुछ बड़े बड़े बिजनेस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट भी लोगों ने आपस में साइन किए
MOU साइन किए। तो अब ये सफीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट रिकग्निशन के साथ साथ एक बिजनेस नेटवर्किंग भी बनता जा रहा है। नाज़रीन, सफीर पाकिस्तान को टुगेदर करने में मेरी वाइफ फातिमा खान बहुत आगे थी, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। पस पर्दा वो बहुत काम करती हैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में, कामयाब करने में। इसके अलावा मेरे वो स्पॉन्सर जो मेरे साथ रेगुलर हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया और कामयाब किया। ऑफ कोर्स मेरी प्रोडक्शन टीम जिसमें जेसन भी शामिल है, बेहद मेहनत की, बड़ी उन्होंने DVDs प्रोड्यूस की। और मेरी फैमिली, माय डॉटर शमा खान और माय सन आदिल खान भी इसमें शामिल है, और मेरा स्टाफ शामिल रहा इसमें, कम्युनिटी के लोग शामिल रहे और प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। मैं बड़ा मशहूर हूँ उन तमाम लोगों का, उन अखबारात का जिन्होंने फ्रंट लाइन हेडलाइन न्यूज़ दी, जिसमें पाकिस्तान क्रॉनिकल, पाकिस्तान न्यूज़ इन ह्यूस्टन एंड उर्दू टाइम्स, जनाब सलीम सैयद साहब, और मैं मशहूर ममनू हूँ जनाब सईद शेख साहब का, जावेद ताहिर साहब का, फैयाद हाशमी साहब का, फैयाद मर्चेंट साहब का, जो ह्यूस्टन से आए और इसमें शिरकत की। इसके अलावा ऑफकोर्स और दूसरे हमारे अवार्डीज़ और नॉमिनीज़ जो बॉलिंगब्रुक से, शिकागो से, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से आए और डैलस से आए और उसको कामयाब बनाए। स्पेशली हसन हाशमी की फैमिली, पूरी फैमिली आई, डॉक्टर खालिद महमूद डैलस से आए और उन्होंने इसको कामयाबी से हमकिनार किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ कौमी परचम पाकिस्तान और कौमी परचम अमेरिका से हुआ, जो कि 2 लड़कियां उसको आगे लेके बढ़ती रहीं बहुत खूबसूरती से, और स्टेज पे जाके वो खड़ी हुई, और उसके बाद कौमी तराना हुआ और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, इससे पहले कि आप में बेचैनी हो और आप में एक असराबी सी कैफियत हो, आइए आपको लिए चलता हूँ सफ़ीर पाकिस्तान रेनेसान होटल 7th अवार्ड नाइट, जहाँ से आप पूरी प्रोग्राम का आंखों देखा हाल मुलाहिदा फरमाइए। ये रिपोर्ट। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back.
She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाजरीन, सफ़ीर पाकिस्तान की 7वीं अवार्ड की तकरीब गाला डिनर का आगाज़ हुआ जाता है। लॉन्ग बीच रेनेसां होटल में ये पुरवकार तकरीब एक मिसाली तकरीब है जिसमें अमेरिका के दूर दराज स्टेट से लोग आए हैं और मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। कांग्रेसमैन जूडी चू, कौंसल जनरल रिफत मसूद और नामवर फिलैंथ्रोपिस्ट डॉक्टर मेहर तबताबाई ने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए हैं। सफ़ीर पाकिस्तान का सफ़र तवील और दुश्वार गुजार और कठिन रास्तों से गुजरता हुआ आप लोगों के लिए मशले राह बन चुका है। ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो हर घर में नहायत शौक और ज़ौक़ से देखा जाता है। ये वतन से दूर वतन की खुशबू और महक भी है और ये पाकिस्तान की एक नहायत खूबसूरत तस्वीर भी है। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानियों के जज्बात और एहसास की तर्जुमानी भी करता है। आज रेनेसां होटल में एक तारीख रकम हो रही है। आज लोगों के चेहरों पर एक कामयाबी और कामरानी की चमक भी है। बूढ़े, बच्चे, जवान, दानिश्वर, शायर, मुसव्विर सभी यहाँ मौजूद हैं और वो कामयाब और कामरान लोगों की एक झलक देखने के लिए बेचैन हैं। आइए आपके लिए चलते हैं रेनेसां होटल की इस पुरवकार तकरीब में। मुलाहिज़ा फरमाइए। Thank you all for being here and celebrating Safir Pakistan 7th Award Night and Gala Dinner. The award night is one way for Safir Pakistan and its management to thank all the patrons, supporters, sponsors, well-wishers, and friends for being side by side, many of them with Safir Pakistan over a decade or so and being so loyal to Safir Pakistan. Safir Pakistan and its board members feels that it's important to recognize those who have played a vital role for their contribution, achievement, high rank in their professions, and are making a difference in their community. At this year's award night, we are here to recognize individuals from all over the United States of America, as well as individuals from other parts of the world. Safir Pakistan is committed to bring community together and feels it's important to award people for their quality efforts. Without further ado, I'd like now to begin the program with recitation of the Holy Quran by Faisal Qasim. Faisal?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
I would like to invite Congresswoman Judy Chu to come forward and please give her remark. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do in providing a very crucial source of news, information, and entertainment to the Pakistani American community. Now, in my experience, the ethnic media is very, very important. You know, it was a year and a half ago when I was elected to Congress, and I became the first Chinese American woman elected to Congress in history. And it was a tough race. And I know that if it weren't for the ethnic media, I would not be where I am today. So it is very, very crucial to the total empowerment of our communities to have a very, very active ethnic media that can reach out and inform the community. I want to commend you for having this event, for being able to award so many wonderful and accomplished people. I have certificates for all of you who are the awardees tonight, but right now I'd like to give a certificate of congressional recognition to Safir-e-Pakistan, GOUSA. Waqar Ali Khan, please come and accept this for all your outstanding work. Invite our Honorable Counsel General, Mrs. Rifat Masood, to please come forward and say a few remarks about tonight's event. Mrs. Rifat Masood. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani American community together, in informing them about events that take place not only in Pakistan, but also highlight the work that you are all doing here, so that you are informed of yourselves, of the kind of activities that are taking place in your professional lives, in your personal lives, and it serves as an example to your children also, because they will then see how successful their parents have been in the United States and how important their country of origin, Pakistan, has played in their lives, and in fact, form a bond between their own country and that of their country of origin, Pakistan. So I feel that Safir Pakistan needs to be supported, encouraged in expanding its network. We see you only on the weekend. We would like to see you every day of the week, if that's possible, because we want to know about what's happening throughout the United States. And an important thing is that all of the community here is together. You see, I always talk about unity amongst the community. We may have our own political views, we may have our own ideas about what should be happening in Pakistan, what should be happening here, but our main goal should be promotion and strength of our own community here. And that is what we should all be working for. So once again, I'd like to thank everyone for joining us today, and especially Waqar and Fatima for organizing this. I wish you all the best, and especially all the awardees. I salute the work that you have carried out, for which you are being recognized. And I hope that, inshallah, Safir Pakistan will move on from not just the 7th award, which we see tonight,
but for many, many years, continue its good work and its hard work. So thank you very much. I'd like to invite Dr. Meher Tabatabai to say a few words about Safir-e-Pakistan. Safir-e-Pakistan is doing a great job. I think we need to support this organization. They truly are the voice of our nation outside Pakistan, and they really bring the Pakistanis across America together. And I think it is the duty of all of us to support Waqar and Fatma in bringing all of us together. I'd like to acknowledge here that Dr. Tabatabai and Kesarbai, they have been a staunch supporter of Safir-e-Pakistan throughout the year, and Dr. Khalid Ahmed and Dr. Parveen Ahmed. Without their sincere support and efforts, Safir-e-Pakistan would not be where it is today. Our first award goes to Dr. Asif Mahmood as the Man of the Year. Safir-e-Pakistan has done a tremendous work in introducing more and more Pakistanis and Pakistan to this country. At this point, I just want to acknowledge there are so many important people in this hall who have made all the efforts and all the input, whatever I do, and it would not be possible without help and support of all of you, and especially Safir-e-Pakistan. And I would like to thank my wife and my 2 kids over there sitting to be giving all the time I spend around. Thank you very much again, Waqar Bhai. My name is Lisa, and I'm here representing Congressman Brad Sherman. Unfortunately, the congressman could not be here tonight because he is in Washington, but he asked that I attend in his place. This flag was flown over the U.S. Capitol in honor of your outstanding service to the community. From Las Vegas, Nevada, a renowned physician, Dr. Nafis Nagi, who is being recognized for lifetime achievement. I just want to thank all, particularly Safir-e-Pakistan, for the honor they have bestowed to me. I've been humbled. Thank you again all. Thank you very much. The recipient of next award is Mr. Tahir Javed, Mohammed Tahir Javed, who is recognized as Businessman of the Year. And I would like to dedicate this award to my wife, Robina Javed, sitting there. And Safir-e-Pakistan always encourage people like me and majority of the entrepreneurs in this country. And I think they need to keep up this work. And it means a lot to the people when they get this recognition. Thank you very much. The recipient of next award is Syed Waqas Bukhari, as the healthcare visionary, a renowned cardiologist from Riverside, California. And I'd like to invite Dr. Meher Tabatabai to please come forward and present him with his award. I would like to thank you, Almighty Allah, Safir-e-Pakistan, all of you, and would like to dedicate this to my wife and my family. Thank you very much. Next, we'd like to recognize Dr. Shaukat Bangash from Pakistan. Actually, he's from here, but he is mostly in Pakistan. And he's the CEO of Quaid-e-Azam International Hospital that's under construction and soon to open its door. It's a state-of-the-art facility. Please welcome Shaukat Bangash for healthcare in Pakistan. Thankful to Allah Almighty, my parents, my family, my partners, and Mr. Waqar Khan for introducing Quaid-e-Azam International Hospital in America. Our next recipient is Suleiman Hashmi, who is being recognized as the Youth of the Year. And I'd like to invite Dr. Khalid Mahmood, who came all the way
from Texas to join us today to give him his award. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safira Pakistan. I'd like to especially thank my parents, my brothers, my wife, and my kids who are here as well. We've been lucky to sustain pretty aggressive growth through this economic time, and we're very excited about that. Last year alone, we did over $100 million of acquisitions. So we're a growing company. We look to diversify in different states, and thank you all for inviting me here. Thank you. The next recipient of our award is Mr. Jamal Khwaja as the Entrepreneur of the Year. I'm really humbled here. Thank you very much, Safira Pakistan. I just want to add this, that recently I was given an award, similar award by Indian American community, but this means a lot to me. Thank you very much. Also, Jamal Khwaja is the owner of JFK Realty, which is also recognized tonight as the Company of the Year. Next, we would like to recognize Dr. Arjuman Hashmi. Unfortunately, Dr. Hashmi could not be here, but he sent his 2 sons to come and receive his award because he's running an election campaign. It's an honor on behalf of my father to be able to receive this award on his behalf, especially this Father's Day weekend. And it's a privilege to be here in the company of such inspirational people who continue to work hard to make our community better. And I hope all the recipients continue their efforts and continue to inspire us youth. Our father would have loved to make it with us tonight, but he was busy running the election, but back at home. And we're proud to say that he officially won. Next, we like to recognize Mohammad Munir Akhtar, all the way from Chicago, as the Industrialist of the Year. Thank you very much, Waqar Bhai. I really want to thank you from the bottom of my heart. But for you, my heart does not have a bottom. So Safira Pakistan, all the best. Thank you. Dr. Tahir Akhtar from Dubai. And it is a great pride, really, to be honored here amongst the American achievers. And I think this builds a little link, and perhaps we need to just keep building these links and create Safira Pakistan in the rest of the world. Our next award goes to Mr. Ibad Rahman as the Community Activist of the Year. On behalf of Ibad Rahman, who is also, aside being a community activist, he's also a patron of MQM USA and MQM North America. I'd like to thank you, Waqar Bhai, Safira Pakistan. Next, we would like to recognize Dr. Joseph Agares, and I'd like to invite Dr. Mohammad Razak to please come forward and present him with his award. I really want to accept this award, not just for myself, but on the behalf of my team. It's not possible to do the type of work we do without the people that I have behind me when I make these trips. The next award goes to Hanadi Nadeem. I'm so thankful to Waqar Bhai, Fatima, and Safira Pakistan for giving me this award. And I'm also thankful to my husband, who is always there to support me. Tonight, I feel so honored and humbled by receiving this award. Thank you so much. Our next recipient is Dr. Sattar Abbasi, who is receiving our Pride of Performance Award.
I'm privileged to be in the company of so many devoted people. Thanks to my family as well for my support, and thank you, Waqar Sahab. Thank you very much. Our next recipient is Mohammed Saeed Sheikh, also receiving Community Service Award. I would like to thank my wife Farida for her unconditional support in making me tonight here as one of the best candidates to serve City of Houston and to serve Pakistani American community. Thank you very much. Our next recipient is Mr. Talat Rashid, and I'd like to invite Mr. Abid Malik to come forward and present him with his award. I accept this award on behalf of the Association of Pakistani Americans in Bolingbrook. We started this organization 25 years ago, and we're the only city in the United States that does flag hoisting ceremony for the past 20 years. Our mayor is very supportive and very pro-Pakistani. On behalf of the association, our mayor has given me recognition and proclamation award to Mr. Waqar Ali. And Mr. Waqar Ali was there 2 months ago when I received a Lifetime Achievement Award from the Chamber of Commerce. And our mayor was very impressed with the work that Safira Pakistan and Waqar Ali Khan is doing. And on behalf of the mayor, I would like to present this award to Mr. Waqar Ali Khan. I'd like to invite Mr. Mir Ali, also from Chicago, Illinois, for community service. Thank you, Safira Pakistan, for recognizing me for the service, which I consider to be a reward in itself. I'd like to thank my family and the Bolingbrook community for allowing me to address the needs of an ever-growing and ever-changing community. Our next recipient is Dr. Naseem Malik, who is being recognized tonight for his professional achievement. It's my pleasure to nominate Dr. Naseem Malik, the recipient of this year's Community Service Award. Dr. Malik did his medical education in Lahore, Pakistan, his FRSH from England, and PhD here in US. Beside being a hardworking physician, he's silently helping many orphan kids, families, and students from primary school to medical school in Pakistan. Here in US, he's involved in many community services, organizations such as Human Development Foundation, Sabha Trust, Urdu Literature Society, and many other organizations. He works closely with the state and National Republican Party on many commissions and has received many awards and commendations such as Eisenhower Commission Award for a lifetime of dedication and support of the National Republican Party. He's a devoted husband, a great father, and a super grandfather. He's our good friend, always ready to help, and a father figure to me. We are fortunate to have him as a part of our community. Please put your hands together for the year's Community Service Award recipient, Dr. Naseem Malik. First of all, I thank Fatma and Waqar Ali Khan and for their hard work. And I endorsed last year's award ceremony as our Lee Baca gave the statement that he deserved for the nomination for the, shall I tell what he told? So, Nobel Prize. And so, I'm very thankful to my family. The next recipient is News Pakistan as the Media of the Year. I just want to say thank you to the community and thank you, Safira Pakistan. Thank you.
The next recipient is young Rashid Mehman for the Pride of Performance Award from California. First of all, thank you, Waqar Bhai and Safir Pakistan for this honor. And especially thanks for Shafiq Khan, my family, and Zishan for their support. Our next recipient is Mr. Fayaz Merchant for Pride of Performance. First of all, I want to thank God for showing me the light that helping other people, helping community is the real purpose of life. The next recipient is Mr. Khurshid Qureshi, who is being recognized in innovation and technology. I'm going to dedicate this award actually to all the young innovators of Pakistan. Thank you. Dr. Randy Deal for Pride of Performance. Randy Deal could not attend the function due to his preoccupation, but he has sent his message, which I'll read for you. He says, I'm delighted and extremely honored to have been selected as a recipient of the Safir Pakistan 2011 Pride of Performance Award. There is a special recognition to Dr. Khalid Mahmood as our Physician of the Year. It's a great honor and humbling experience. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab for this award. They are being recognized as the best NGO of the year. Shine Humanity, Dr. Salman Naqvi, and Todd Shiat. If you don't know about the work we're doing, I hope you'll visit shinehumanity.org and see the great work we're doing. There's a lot of fantastic, wonderful organizations out there in Pakistan. Pride of Performance. These are congressional certificates from Congresswoman Judy Chu's office. So I'd like to invite Mr. Zafar Abbas and Anwar Khwaja on behalf of Arif Bhai to come forward and accept their awards. मैंने इसलिए बिगनिंग में अपनी तकरीर से आगाज़ नहीं किया कि मैं चाहता था कि आप एंजॉय करें और देखिए मैं तो हर हफ्ते आपके घरों में मौजूद रहता हूँ, आपके ड्राइंग रूम में मौजूद रहता हूँ, ठीक है, और बहुत जल्दी आपके कार में भी आ जाऊँगा और टेलीफोन पे भी आप तैयार रहें। सफ़ीर पाकिस्तान आपकी आवाज़, आपकी पहचान, आपके जज्बात और आपके एहसासात का तर्जुमान सफ़ीर पाकिस्तान। और मैं आज फिर मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे कौंसलेट हैं, कौंसल जनरल्स, ह्यूस्टन में हो या न्यूयॉर्क में हो, शिकागो में हो या एलए में हो, ये आपके नुमाइंदे हैं और इनसे आप बहुत कुछ काम ले सकते हैं, लेकिन आप लेने का तरीका जानते हो। देखिए आज सफ़ीर पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इससे आगाज़ भी तारिक अज़रुद्दीन साहब जो हमारे कौंसल जनरल आजकल एम्बेसडर हैं टर्की में, उनकी ताउन से हुआ और ये ताउन बहुत ज़रूरी है, ये चोली दामन का साथ है। सफ़ीर पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम द केबल टीवी, 4 years on the cable TV without any absentee, PTV Prime 5 years, 6 साल जियो पे हो गया है माशाल्लाह। तो ये आपकी सपोर्ट से चल रहा है, आपकी डेडिकेशन से, एंड यू गाइज अंडरराइटर्स, सपोर्टर, स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रोग्राम। सफ़ीर पाकिस्तान बहुत जल्द इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाएगा, उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ऑफ कोर्स आपके बगैर ताउन के ये मुमकिन नहीं। मेरे जितने भी गेस्ट हैं जो एब्रॉड से आए हैं, बैरून ममालिक से आए हुए हैं,
अमेरिका की दूसरी स्टेट से आए हुए हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर और ममनू हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, अपनी फैमिली को लेकर आए और अपने काम को पीछे छोड़ के आए। और स्पेशली जनाब हमारी कौंसल जनरल साहबा रिफत मसूद, और डेफिनेटली ऑफ कोर्स माय ग्रेट फ्रेंड्स सपोर्टर्स जनाब कैसर मदाद साहब, मेरी बहन आपा डॉक्टर मेहरतवा दवाई, जनाब खालिद साहब, हामिद मलिक साहब, डॉक्टर हाशमी, जनाब जमाल ख्वाजा साहब, सईद शेख, ताहिर जावेद, वकास, एंड यू नेम इट, मिस्टर हाशमी, हनादी, तलत साहब, ताहिर साहब जो दुबई से हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सपोर्ट किया। और अब आप एंजॉय करें इस इवनिंग को भरपूर। ये रंग तेरा सुनहरा लगता है मुझको ऐसे शम्मे हुआ सवेरा, हर अदा तेरी है दिलनशी मजबी, इस तरह मैं करूं अपने दिल पर काबू, मुझको दिल दे दो, मुझको दिल दे दो, मुझको दिल दे दो, मुझको दिल दे दो, मेरा दिल ले लो, मेरा दिल ले लो। साईं लतीफ सदा जी पीरानी पीर हकमला, क्या बात है बांसुरी। जेके में हर कन्नीड़िए दूं तनखे लहर लूटे ये नहीं, मैं हर कन्नीड़िए दूं तनखे लहर लूटे ये नहीं, जेके में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा उसानी हुम्मा हुम्मा गुजड़ी हुम्मा हुम्मा दिलड़ी बटारी। ये है दिलेर द ब्रेव कपल, क्या बात है, इनके लिए ताली बजाइए आप लोग सब। कारियों कारियों का क्यों है कुंडली वाला, सिकबारा देहन जियनी तू तनके लहर लौटे दी के नहीं, जंगे में हर कन्नेड़ी तू तनके लहर लौटे दी के नहीं, जंगे में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा उसानी हुम्मा हुम्मा गुजड़ी हुम्मा हुम्मा दिलड़ी बटारी। गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में हो UPNA looks forward to welcoming the Pakistani physician community to the 34th annual summer meeting in St. Louis, Missouri. As the president of UPNA, it is my honor to invite the Pakistani physician community to the 34th annual summer meeting in my hometown, St. Louis, Missouri. The host committee and I have been working very diligently to ensure the meeting is memorable for our members and their families. We are going to have innovative CME sessions, mushara with world-renowned poets, and of course, top-notch Pakistani entertainment. As the chairman of the host committee, we have put together a great program for your enjoyment. St. Louis has many attractions for your entire family, including the historical arch known as the Gateway to the West, a nationally recognized zoo, and a vibrant botanical garden. We look forward to welcoming you and your family this summer in St. Louis.
likes something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने आज का प्रोग्राम देखा होगा और आपको एहसास हुआ होगा कि हमने कितनी मेहनत से और डेडिकेशन से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और इंशाल्लाह ताला अब ये सफ़ीर पाकिस्तान लॉस एंजलिस से मूव होके ईस्ट कोस्ट जा रहा है, तो बहुत जल्दी हम एक शहर का अनाउंस करेंगे। आइंदा हमारी सफ़ीर पाकिस्तान की 8th अवार्ड नाइट लॉस एंजलिस से कहीं किसी दूसरे स्टेट में होगी। तो एक बार फिर आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, अभी से ही इस पे काम शुरू कर दें ताकि हम आने वाले 8th अवार्ड नाइट में उनको इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें। नाज़रीन, हम बड़े मशहूर हैं, ममनू हैं इत्तेहाद एयरवेज़ के भी कि जो हमारे साथ हैं, और सफ़ीर पाकिस्तान इज़ ए ब्रांड एम्बेसडर और ए मीडिया पार्टनर विद इत्तेहाद एयरवेज़। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि आपको कोई बिज़नेस को आप प्रमोट करना चाहते हैं, कोई अदारे को प्रमोट करना चाहते हैं, सफ़ीर पाकिस्तान इज़ द आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर योर कंपनी, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर NGOs। डेफिनेटली NGOs को हम बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारी खदमात उनके लिए मुफ्त हैं। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान से राब्ते में रहिए। सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा आपकी आवाज़ और आपकी पहचान बन के रहेगा। ये आपका अपना प्रोग्राम है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।